Hello guys, welcome back to my channel again. Here I am with a new series again जो कि है IPO के बारे में. Well guys, main motive behind this channel is to provide you knowledge about the stock market. हम सभी लोगों को मालूम है कि stock market समझने के लिए बहुत ज्ञान चाहिए. One have to be totally committed into it. So I provide basic ideas which will help you to understand the market. So guys, support my channel, like जरूर करना अच्छा लगे तो कि YouTube algorithm catch कर सके. So guys, coming to the point, अब सभी लोग सुनते हैं कि IPO. Especially जो beginners होते हैं stock market में उन लोगों को मालूम नहीं होता है. Even if they know limited. IPO ये है वो है, लेकिन असल में क्या है ये IPO? तो आज हम जानेंगे इस वीडियो में सिंपल तरीके से ताकि आप सभी लोगों को समझ आए. So let's start. First point is what is IPO? वैसे IPO को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है. Why पब्लिक ऑफरिंग? क्योंकि यहाँ एक प्राइवेट कंपनी ट्रांसफॉर्म होकर पब्लिक कंपनी बनता है. वीडियो को स्किप मत कीजिए, वॉच कम्प्लीटली इन ऑर्डर टू नो IPO प्रॉपर्ली. आप सभी लोगों को मालूम है a little knowledge is a dangerous thing. If you skip here, you may skip the huge opportunities in your life. So don't skip. Coming back to the point, why a private limited company transforms into a public limited company? इसका मेन रीजन है फंड रेज करना पब्लिक से in order to expand business, repay debt, etc. बेसिकली फंड रेज किया जाता है स्टॉक इशुएंस के माध्यम से. सिर्फ यही नहीं, IPO कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज देता है कैपिटल रेज करने का प्राइमरी मार्केट में. अगर आप लोगों को मालूम नहीं कि प्राइमरी मार्केट क्या है, तो ये एक्चुअली जब भी कोई कंपनी प्राइवेट से पब्लिक ट्रांसफर होता है तब नया स्टॉक्स इश्यू करता है, where securities were created. So in this primary market, companies sell new stocks and bonds to the public for the first time, जैसे IPO के थ्रू. So I hope you guys know now what is an IPO. Coming to the next, how an IPO works. कोई भी कंपनी IPO से पहले उसे प्राइवेट कंसिडर किया जाता है, where small numbers of investors invest, like founders, families, and friends, along with the professional investors such as venture capitalists or angel investors. ये वो लोग होता है जो फंड प्रोवाइड करता है प्राइवेट कंपनी को ग्रोथ के लिए. IPO एक बहुत बड़ा स्टेप है कंपनी के लिए, as it provides the company with access to raise lot of money. जब कंपनी certain stage में पहुंचता है and thinks of expanding its business or need money, अब after qualifying certain regulations, it issue new shares in the form of IPO in the stock exchange, where investors can invest in it. Once the IPO is done, the shares of the firm list and can be traded freely in the open market. Coming to the next point is the types of IPO. अभी तक हम लोगों ने जाना है कि IPO क्या है और काम कैसे करता है. यही जानने से one cannot completely rely on it or invest in it. So इसीलिए we need to know the different types of IPO. Basically there are two common types of IPO. One is fixed price offering and the second is book building offering. In the first type, the price of the IPO is fixed. यहाँ investors को मालूम चल जाता है कंपनी का stock price that the company decides to make public. जब भी कभी कोई investors invest करना चाहता है, he or she must ensure that they pay full price of the share when making the application. In case of book building, the company initiating an IPO offers a 20% price when on the stock to the investors. The interested investor bid on the share before the final price is decided. यहाँ investors को specify करना पड़ता है the number of shares they intend to buy and the amount they are willing to pay per share. यहाँ final price determine किया जाता है investors की bid के ऊपर. Next है advantages and disadvantages of IPO. जैसे कोई भी सिक्के का दो पहलू होता है, वैसे ही किसी भी चीज का advantages and disadvantages होता है. तो IPO का पहला advantage है company gets access to investment from the entire investing public to raise the capital. दूसरा advantage है this facilitates easier acquisition deals and increase company's exposure, prestige and public image, जो company sales and profit में help करता है. Third advantage है increased transparency. जब quarterly reporting होता है, usually a company receive more favorable credit borrowing than a private company. अगर disadvantages देखें तो पहला disadvantage है IPOs are expensive, जो cost चाहिए होता है एक public company को maintain करने के लिए बहुत ज्यादा होता है. Second disadvantage है fluctuations in a company's share price. The third disadvantage is that company had to disclose its secrets like finance, accounting, tax, business methods, etc. जो कि competitors के लिए बहुत helpful होता है. Coming to the next point, can anybody invest in IPO? वैसे IPO में तो कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन सप्लाई से ज्यादा डिमांड होने की वजह से there is no guarantee that all the investors interested in an IPO will be able to purchase shares. But list होने के बाद particular shares में इन्वेस्ट कर सकते हैं. Another option is to invest through a mutual fund और कोई भी instrument vehicle जो IPO में फोकस करता है, example ETF. The next point we gonna know is that can one gain profit through an IPO? Yes, one can gain profit through an IPO, लेकिन मैटर करता है कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करता है. Based on company's fundamental and technical analysis, its profits, business model, earnings, aims, etc. In case if you invest in a good company through an IPO, when the company lists in premium, then you can get a profit depending on your investments. Well guys, thank you so much for
for watching this video. If you are new to this channel, please hit the subscribe button and share with your friends and families. See you in the next week with a new topic once again.